Yeah. Yeah, I think some of the names are new. They are from the new batch. I don't think so. Okay, okay. Nice. Oh, we So, can continue. can we start the conversation? What is that? Can we start the conversation Yeah, for yeah. today? Yeah. तो जिनका इस मीटिंग में वो लोग हैं जिनका अगले 1 महीने में या तो इंटर्नशिप खत्म होने वाला है और नहीं तो वो लोग हैं जिनका 1 महीना इंटर्नशिप हो चुका है. Yes. Yes, sir. Yes. Yes? Yes. तो जिनका 1 महीना इंटर्नशिप बचा हुआ है, आप लोग पिछले 2 महीने में बहुत कुछ सीखे किए, लेकिन वो पब्लिक में नहीं जा पाई चीजें, सोसाइटी में नहीं जा पाई, कम्युनिटी में नहीं जा पाई हैं बहुत ज्यादा. हाँ, एक बार हम लोगों ने 5 जून का एक प्रोग्राम किया था. Sir, can you please repeat? Actually, I had poor network connection. Okay. So what I'm saying is, in last 2 months or even in 1 month, we have done so many things. We have learned so many things so far. And I'm sure all of us have a better understanding of the plastic pollution, yeah, and as well as the impact it is creating on everyone of us. Together, we have designed a campaign in which we want to ensure that none of the plastic that comes to our house goes into the environment. It is very simple. We are trying to invent a circular economy wheel in Patna. Few things that I want to clarify as I was hearing to the yesterday's conversation. Yeah. So in that, I heard like our problem is focused on Patna. So should be the solution. Well, partially this is correct, but I look at little further. If you have a problem in your city, so the problem doesn't stay there, it floats out, right? And when we are talking about plastic pollution, it does to our rivers. It is from Bihar, it will go to Jharkhand, then from Jharkhand it will go to West Bengal, then from there it will go into the ocean, and then it can end up anywhere. Also, or whatever the challenges may be. So it doesn't stay any challenge or any problem that stays in a doesn't stay in a confined space. It has a nature of expansion. It keeps expanding. However, the solution should be this should be on a very focused area. If we have a big problem, okay, I agree, we may need a big solution, but big solution doesn't imply everywhere together. Everything has to go step by step, right? So here in Tarumitra, we also have a motto which says, think global, act local. Because the same problem is everywhere. You cannot say, okay, this is only problem of Patna, and this is, okay, you may have same problem in Delhi, but I don't want to talk about your problem. Why not? Yes, we should talk about their problem. We should share what we are doing to solve our problem. So, excuse
excuse me. So they can learn from us. And at the same time, if they can help us, make our solution better. But yeah, it would be very true to say that we would not be able to go and work there and leave our work here. It goes easy with our theme. Think global, act local. Yeah, the problem is everywhere. But as an individual, what you can do? Can you solve the problem of the world? Yeah, maybe someday. But now, suppose if I can solve this very small problem of mix plastic waste with other waste in our home, then we go in our community through schools or just into our community. If we are living in an apartment, we can do there. If we are living in a gated community, we can do it there. We can go to schools and we can, do it with the school kids. This is what we have been talking about since a long time, right? But whatever we would be doing in Patna, don't you think it will have an impact on the other areas, other places? Like earlier, suppose we were sending 10 pieces of plastic through our river in Jharkhand. And if we are trying to save, put all of our plastic waste and send it to recycling through a circular economy model, then we wouldn't be sending any plastic in Jharkhand. If there are plastic, then I'm sorry, then that is a problem from Jharkhand because they are also generating it. Yes. So yeah, the impact, a positive impact can be extended to just the way the negative impact is extending by itself. And for everything, we'll have to do things here, wherever we are. Not only in Tarumitra, but also in your homes, in your community. And maybe someday we can work for the whole city and join this. And then it is a possibility. I'm not sure. I am very hopeful and optimistic to see something like the whole Patna is not throwing or ensuring that whatever plastic comes to our house, or the plastic wrappers I'm talking about, especially the single-use plastic, any kind of single-use plastic that we use it responsibly. What does it mean to use responsibly? We use it, then we ensure it is collected, segregated, so it can be sent for recycling. If it is segregated, it can be sent for recycling. Once it is mixed, there's no possible way. Yes, there are possible ways, but that is very costly. At the same time, inhuman. Suppose if you are putting some humans to work on that and segregate it, that would be very inhuman to do. And I think most of us are ready to bring this vision into a reality. We could be the stepping stone. And only if we could do it, or we could start it, it can, expand. We have discussed so many things so far, and we have a lot of ideas, ideations, and processes to do things. I think this is the time we should step out.
out of our home and get into the community. At the same time, practice it at our home. I'm sure many of you are already making eco grade. Some of you have already submitted it in Tarumitra. And the new people would be making it too. Now this needs to get out of your home, in your neighborhood, in your community, or maybe through schools in our city. I'm very much eager to see it start with you guys. Now, what are the things which are stopping us to start? If we have to start it tomorrow, what are the things which are stopping us? Door is open for all. And please share your concerns or whatever you feel like. Yes, good evening, sir. Very good evening. सर आई थिंक फर्स्टली हम लोग खुद प्रिपेयर नहीं है कि एग्जैक्टली स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे कैसे, और जो टॉपिक्स हमें एक्टिविटी का तो वी नो कि कैसे करवाना है, बट जो टॉपिक्स एक्सप्लेन करना है उस चीज के बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, जो हम लोग अभी तक उस चीज को भी सही से नहीं जानते हैं। तो उसका एक अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता लाइक इजी लैंग्वेज में तो वो सही होता। Okay. Okay. Can someone make a note of this part? I'll do. Okay. Yeah, this is very nice thing. Identification, nice identification that we are not yet confident to speak or share the information with other people like the students. If we have to do some, presentation, if we have to do a presentation, then we may not be able to do it properly. Okay. So what should be done to make it happen? We can discuss it later. If anyone can come up with the other thing, suppose if we have to start things tomorrow, what else is not ready? Manjit? Yes, sir. What all things are not ready at your end? Okay, so from my end, the web page is still in pending. Okay. Palak, can you make a note of? Okay, sir. Yeah, so actually I'm waiting for the rest of the content. That's just two, three more points. Then we will start working on the web page also. And else, as Palak said that, of course, that was also I was thinking about that we should have a session for our own interns to teach them how to like how to बातें कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ like that. Because till now मैंने अब तक ये ऑब्जर्व किया है कि they are not interacting with us only, then how they will interact with the others. Like काफी लोग they have them, they are all the time they have their mic muted, and I don't think. See, Manjit, this is not a concern to be addressed at all, because
if we are talking here, I have been giving sessions. I have Okay, shared a so lot of documents which people should read, and this is part of internship, and this is not a classroom session. yeah, Here, I have provided all the information to everyone, and I have discussed everything so far. Okay, yeah, and if people are not talking here, that is not my problem. At the same time, what are they going to do with their school? That is also not my problem. This is an yeah, internship where you have to perform certain tasks. yeah. If you learn it well, if you do it well, that is good for you. If you don't learn it well, if you don't do it well, you would be the one who would be facing the consequences at the end of the day. Correct. I'm not a teacher sitting here. I'm not the educator here. Okay. मैंने किसी कोई फीस तो नहीं ली है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिखा ही देना है. Yeah, sir. और कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान सारा काम अच्छा ही करे. जब आप कुछ गलतियां करते हैं तो गलती करके भी बहुत कुछ सीखते हैं. इनफैक्ट मुझे तो true. कि आप जब सही काम करके जितना नहीं सीख सकते हैं, आप काम को गलत तरीके से अगर आपसे हो जाता है तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं. I think this is a good way. Yeah, Okay, yeah, so sir. पीपल जो पिछले 2 महीने से या 1 महीने से इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. उनको सब कुछ सिखा दिया गया है. उनको क्या कंटेंट भी दे दिया गया है पढ़ने के लिए. उस कंटेंट को बार बार हम लोगों ने मीटिंग में डिस्कस भी कर लिया है. एंड इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज गो बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड लिसन टू द कन्वर्सेशन Yeah, एट 1.5x 2x. आप खुद से भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कम एंड कॉन्टैक्ट मी. यस, yeah, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. तो पीपीटी नहीं है, वेब पेज नहीं है. और ये जो तीसरा आपने बोला कि ट्रेनिंग तो हो चुकी है. दैट इज डन. दैट इज नो मोर डन पार्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट कुड बी नेक्स्ट? What is the third thing which is stopping us to start our campaign tomorrow? Very specific question. Please feel free to answer it. प्रिंसिपल को देने के लिए लेटर बन चुका है. yeah. I think that is ready. नो सर, उसमें कुछ नो कुछ सर, करना है. Huh? वो लेटर फुल्ली रेडी नहीं है, हम उसमें कुछ changes चेंजेस करना है क्योंकि अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेशंस होंगे ना. Okay. I think we were doing the online sessions only, right? नहीं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. Activities, how are you going to do all the activities online? Yeah, correct. Sessions you can do online, but activities you have to go there. Okay, so I think then we will need to reframe the letter again. Okay. So yeah, I have written that. One Okay. more thing, sir. I saw the letter, but at the bottom, Shaswat sir name is written there. So I think we should remove that or leave that as it is. See, that letter is a simple what we have used earlier. It is there for you to completely change it as per your requirement. Yeah, I think I was. That is a sample. That is a sample, right? Yeah, And you yeah. change it as per your need. Yes. Yeah, sir. So till now, what are we facing that we don't have the web page till now through the PPT letter, nothing else. Maybe
And do we have like a proper plan, like roadmap that how we are going to start, like what we will do on the first day, then second day, like that? Do we need to create a plan or something like this? I think that is already there in the documents that I've shared. Session 1, session 2, session 3, session 4, session 5, session 6. Oh, okay, What all? yeah. What else? बताइए. सर परमिशन फ्रॉम स्कूल. वो तो लेटर होगा तब ना परमिशन होगा यार. क्या? यस सर. What else? इस कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए और क्या चीजें छूट रही है, कम कर रही है? And I heard some in some meeting that everyone are you going to create a team for every school or something like that? Like this team will take care of these schools and like that. Actually, it was supposed to be individual. Yeah, I Everyone think to one school. And if anybody, like suppose if let's talk about Palak and Kaveri. And suppose Palak has visited one school and she wants Kaveri to join her to, because sometimes you would be going for the first time, so you may not feel very comfortable for the first time, no? So if you want to take someone with you, so who can be your support system, if you need something to be done, it can volunteer, he or he can volunteer to do the stuff for you. So I don't mind 2 or 3 people going together, not at all. Yeah, But it doesn't mean that suppose if the school was contacted by Palak, then Kaveri cannot say that I have been to that school. Kaveri need to contact one of her own schools and she can get help from Palak and XIZ. Correct. On that. Yes, sir. Okay. Yeah, I think everything is ready. Like expect these सर two, लाइक 3 सर points. आपने संडे को बोला था सर एक ग्रुप फॉर्म करने सबको, लेकिन सर उस ग्रुप में सर वो अपने कैसे आइडिया दे सकते हैं, बट सर सबको इंडिविजुअल वर्क करना है. यू मीन दिस सर? I'm sorry. सर आपने फिर से लास्ट बताइए संडे क्या? बोला था, सर आपने लास्ट संडे बोला था ग्रुप फॉर्म करने की, सब लोग एक ग्रुप बना लो, उसमें अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो. जैसे मैंने बोला था कि ठीक है आपको आइडियाज ग्रुप में नहीं देना, आप अपने ग्रुप को दे सकते हैं, लेकिन सर ग्रुप के जितने मेंबर होंगे ना उनको इंडिविजुअल स्कूल के साथ सेशन कंडक्ट करवाना है. या लेकिन Yes, आप सेशन अकेले कंडक्ट करवाने की कोई मतलब कि आप जरूरी नहीं, आप अगर आपने स्कूल कांटेक्ट किया और आपने साथ डिस्कशन करना है तो आप अकेले जाने की जा सकते हैं, और आपको लगता है कि एक आध 2 लोग साथ में रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा तो 2 लोग को लेके भी जा सकते हैं. yes sir. Yes. सर Yeah. आई थिंक ना सर कि I'm सर sorry, आई please थिंक go ahead. पहले ना सर कि आई थिंक सर जो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं ना वो ग्रुप के नेम के साथ ना एक उस ग्रुप के लीडर बन जाए, ताकि सर अगर हमें इस तरह से सर पता चलेगा कि हमारे ग्रुप कितने फॉर्म्ड हुए. फर्स्ट चीज उससे सर पता चलेगा कि हम लोग का कितने सेशंस कंडक्ट होंगे. अगर हमको किसी पार्टिकुलर ग्रुप के इंफॉर्मेशन लेने होंगे तो हम लोग एक ही स्टूडेंट से ले सकते हैं जो उनके लीडर होंगे. ऐसे सर अगर पूछते हैं तो फिर सब लोग आपस में कंफ्यूज रहते हैं. Do you mean to say हमारी हमारे सब ग्रुप्स होने चाहिए हमारे इंटर्न्स के? सॉरी सर, आई एम बिट कंफ्यूज. ये जो ग्रुप की जो बात हो रही है ये किनके ग्रुप बनेंगे? ये हमारे जो इंटर्न्स हैं उनका एक सब ग्रुप Yes, बनाने की yes. बात करेंगे.
यस सर। सर आपने बोला था ना कि एक ग्रुप संडे को जो बात हुई थी ना, उस ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, ताकि सर ऐसे एक डॉक फाइल मैं सर फॉर्म कर दूंगी ना, उसमें सर सारे ग्रुप्स के नाम होंगे और पता चलेगा कौन से स्टूडेंट्स किस ग्रुप में। ऐसे सर एक हमारे पास सर वो होगा, रिकॉर्ड होगा, वैसे पता चलेगा। और हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेना है तो हम लोग ले सकते हैं कि किस ग्रुप का वर्क कितने तक पहुंच रहा है। ऐसे सर सब शांत होते हैं इसलिए। ओके, या दैट कुड बी डन। कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं बताइए, हम लोग टोटल कितने लोग हैं? सर अभी तो 30 पार्टिसिपेंट हैं सर, 28। नहीं, नए और पुराने जो लोग ज्वाइन नहीं किए उनको भी मिला करके देखा जाए। सर तो ये सर मैसेज डाल देंगे, उस हिसाब से सर हाँ। सब ग्रुप बना के और डीएम करेंगे। आप लोग हमें डीएम करेंगे और पलक को, ऐसे सर सब तब पता चलेगा ना कितने ग्रुप फॉर्म हुए हैं। क्या क्या क्या? सर लाइक सर हाफ सर डीएम करेंगे मेरे को और पलक को, लाइक ग्रुप उनके कितने फॉर्म हुए हैं। इस तरह से सर जब डॉक फाइल मैं शेयर करूंगी ना, तब सर खुद पता चल जाएंगे ना कितने ग्रुप फॉर्म हुए हैं इंटर्न्स के। One more thing I want to clarify, that I also a bit confused, that what will the purpose of the group, like उनके groups के purpose क्या अनुज, है? एक मिनट अनुज, Yes, sir. you can leave the meeting. Anything else, sir? आज आपके लिए मीटिंग नहीं है, तो प्लीज लीव कर दीजिए। Okay, sir. एनीवन जिनका जून से पहले तरुमित्रा से जुड़े हुए हैं वही लोग मीटिंग में रहें, बाकी लोग इस मीटिंग को प्लीज छोड़ के जा सकते हैं। दूसरी चीज, जो लोग आगे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो लोग मीटिंग में रहें, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे आप भी इस मीटिंग को अभी के अभी छोड़ सकते हैं। I shall repeat myself once more. People who think, अभी तक का जो conversation हुआ, whatever conversation we have so far, if you think that you would not be able to contribute in the conversation today in the meeting, I request you to leave the meeting and save your time and my time too. I'll give you just 2 more minutes. Else, if I don't find people after that having a conversation or saying something, I will remove you from the meeting, and that would mean that you would not be able to join any of our meeting in future. अगर आप मीटिंग में बोल सकते हैं तो रहें, मीटिंग में नहीं बोल सकते हैं तो प्लीज मीटिंग छोड़ दें। सदफ,
सदफनाज, अंचल गुप्ता, Yes, sir. nice. I'm just taking attendance. Jasmine Kumari, Yes. Yes. Ritika, Yes, sir. Maria Bantika, Yes, sir. Nancy, Yes, sir. Shivani Kumari इनका Yes. Yes, sir. अन्य आनंद, Yes, sir. प्रभा शर्मा, Yes, sir. सोनी कुमारी, Yes, sir. अंशिका, Yes, sir. खुशी, Yes, sir. आकांक्षा तिवारी, Yes, sir. रूपाली कुमारी, Yes, sir. कोमल कुमारी, Yes, sir. अंजलि सिन्हा, Yes, sir. श्वेता गुप्ता, Yes, sir. पलक एंड कातिल. Yes, sir. Okay, so this is the final people. And Sir, where you did missed me, our- sir. Oh, sorry, Vaishnavi. I'm missing this girl, Kaveri. Where is she? वो मीटिंग छोड़ के निकल गई क्या? Anyways, let's continue. So this is, I think, the final 4 teams that I can call. आप लोग 1 महीने या 2 महीने से तरुमित्र में हैं, आप लोग बहुत सारी चीजों से बात कर रहे हैं और we had lot of discussions, activities भी हम लोगों ने किए हैं, right? So I think this is the core team जिसको हम लोग मान सकते हैं. अब कावेरी रहती तो वो बताती, because I have never seen Rupali Kumari in any of the meetings. I'm seeing her for the first time. So Dogi ji. yeah, Rupali. Yes, sir. आप ये कितनी बार मीटिंग आप अभी तक ज्वाइन किए हैं आपके पूरे इंटर्नशिप में? सर मेरा 2 या 3 बार छूटा था, बाकी मैंने सारा ज्वाइन किया है. Okay. And your date of joining is 28th May. Yes, sir. Okay. Okay. Anyway, so this is our so far. हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल टीम है फिलहाल. श्वेता, पलक, काजल. तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि how many teams you want to have and how many people you want to be together in one team. तो ओवरलुक करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लीडर हो सकता है. There could be 3 leaders, 4 leaders जो कि नए इंटर्न्स आए हैं उनको भी पॉलिश करने का काम करें और अपना काम भी करें एट द सेम टाइम. आप स्कूल में विजिट करें, फिर अपने 2-3 जो जूनियर्स हैं उनको लेके जाएं, है ना? तो उनको भी सीखने को मिलेगा, हैंड होल्डिंग उनका भी होगा, एक्सपोजर होगा. फिर कल के डेट में वो जब होंगे तो फिर वो अपने जूनियर्स को लेके जाएंगे. सर Yes. 6 की टीम बनाए क्योंकि फिर ना सेशन भी 6 ही होंगे. सेशन 6 होंगे तो टीम्स कितनी होनी चाहिए? 6 की, ताकि फिर हर एक सेशन में एक लीड कर पाएगा और बाकी हेल्प करते चले जाएंगे. I'll say सबको अपने अपने प्रेजेंटेशन खुद बनाने चाहिए. आप मेरे प्रेजेंटेशन को देख बताने में उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन उस हम लोगों ने सेशन किया है उसमें से जो भी चीजें आपको निकाल करके अपने प्रेजेंटेशन बनाने हैं. मेरा बहुत लंबा है, आप छोटा बनाइए, 5 स्लाइड का, 10 स्लाइड का, 12 स्लाइड का, जिसमें आप पूरी चीजें समझा पाए अपने हिसाब से.
लेकिन सर होता ही है ना कि एक ही इंसान बोलता रहता है ना, तो सब बोरिंग लगने लग जाता है। तो 2-3 लोग होते हैं तो फिर वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप ऑनलाइन सेशन 6 लोगों के साथ 6 लोग बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे। अच्छा, एक एक सेशन, ठीक है, या ठीक है, लेट्स स्टार्ट दैट वे। एवरीबडी इज ऑन दैट सेम पेज। हर एक सेशन के लिए 6, मतलब कि 6 टीम बनाते हैं टोटल, और सब सारे लोगों को कैसे करेंगे प्रभा? एक फर्स्ट एक टीम सेशन को एक जैसे सेशन के लिए देंगे। जैसे कि फर्स्ट सेशन जैसे हम लोग करेंगे तो इससे उसमें हेल्प हो जाएगी ना, कि बाकी लोग है ना अपने में भी आइडियाज दे पाए, ताकि बेटर हो जाए। एक का दिमाग रहेगा तो उससे बेटर है कि 2-3 लोग और बताएंगे। मे बी 6 नहीं तो कम भी कर सकते हैं, वैसा नहीं, बट थोड़े ज्यादा नंबर में। ओके, एक और थोड़ा सा रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। सी, हम लोग ये जो पूरे सेशंस हैं हम लोग बाई वीकली करेंगे या फोर्टनाइटली करेंगे, या फिर सारे सेशंस हम लोग बच्चों के साथ एक साथ नहीं करने वाले। ये आप लोग को समझना होगा। एक ही दिन में सारे सर सेशन ये कर रहे हैं क्या? हम लोग No, को of course 3 not, मंथ्स sir. में सारे सेशंस करने हैं ना। हाँ, 3 मंथ्स में सारे सेशन करने हैं, तो जिनका इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा उनके जूनियर्स वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी आप लोग के लिए बढ़िया है, 1 या 2 सेशन पे ही फोकस करना है। और जो आपके जो अभी मई वाले हैं उनको 4 सेशंस के बारे में फोकस करना है, क्योंकि बाकी के 2 सेशन तो उनके बाद जाओ, आपका तो इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा। Are you people getting what I'm saying? यस यस सर। सर। यस। Is it understandable very much, like कि आप इतना 6 चीज के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो 6 आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका इंटर्नशिप ही खत्म हो जाएगा। तो उससे बढ़िया हम टाइम फोकस करें वही चीज भी जो हम कर सकते हैं अपने इंटर्नशिप में। तो आई हैव एन आइडिया, लाइक हम लोग को जो भी सेशंस करने हैं, 2 या 3 सेशंस जो करने हैं, तो हम लोग अपने जो जूनियर इंटर्न्स हैं उनको अपने लास्ट सेशन में लेके जा सकते हैं। लाइक हम लोग 2 सेशन करें या 3 सेशन कंडक्ट करें अपने इंटर्नशिप के पीरियड में, तो जो भी सेशंस हैं वो लास्ट सेशन में हम अपने जूनियर्स को लेके जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम लोगों ने। क्यों फर्स्ट में भी लेके जाओ ना? यस सर, हम फर्स्ट में लोग भी उन लोग को लेके जा सकते हैं, ताकि हम लोग जितना भी किए हैं उसके आगे उन लोग खुद ब खुद ही वर्कअप कर जाए और उतनी मेहनत नहीं करनी पड़े बाकियों को। आप अभी जो टीम बना रहे हैं उसमें ही अपने जो भी न्यू इंटर्न्स हैं उनको ही उनके साथ ही बनाइए। सिर्फ आप लोग अपना टीम क्यों बना रहे हैं? नए वाले के साथ बनाइए तो इजी रहेगा आगे के लिए। सर ओल्ड प्लस न्यू दोनों मिक्स करके बनाए। हाँ, लेकिन पहले आप ओल्ड वालों का एक टीम बन जाए, फिर उसमें से आप अलग अलग टीम में उनको जोड़ लीजिए। जो लोग आपकी टीम में जुड़ना चाहते हैं, कोई दूसरे की टीम में जुड़ना चाहता है, कोई किसी की टीम में जुड़ना चाहता है, वैसे जुड़ जाए वो लोग। यस सर। लेकिन इनिशियली जो लीड करेगी टीम को तो आप ही लोग हो ना। अगर कोई भी चीज होगा तो हम बात तो आप ही से करेंगे ना, है ना? तो आप लोग आपस में टीम बना लीजिए। कितने लोग हैं यहाँ पे मुझे छोड़ करके और आकांक्षा को छोड़ करके? 22 लोग हैं। Leave me also. ओके, मंजीत को भी छोड़ देते हैं। मंजीत भी 21 छूटेगा और फिर शांभवी भी छूटेगी। Yeah. तो 4 लोग छूट गया, 18 लोग हो गए। क्या बात है, 3-3 लोगों का 6 टीम बन गया। Yeah, nice. हाँ, Nice, nice. Really nice. 3-3 लोगों का 6 टीम बना। I think we should divide the team right in the meeting, or maybe we can do later. I think we can divide the हाँ? team now only.
से अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं ब्रेकआउट रूम बना रहा हूँ 6, जिसमें 3 या 4 लोग जाएंगे हर एक रूम में। आप लोग आपस में बात कर लीजिए कि आप लोग एक टीम में रहने के लिए, दिस इज आई एम नॉट डूइंग इट एनी मैनुअली, दिस इज ऑटोमेटिकली। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग दूसरा ब्रेक रूम बनाएंगे जिसमें फिर से रैंडमली लोग जुड़ेंगे। फिर आप लोग बात कर लीजिए कि आप लोग टीम बना सकते हैं कि नहीं आपस में, ठीक है। और फिर थर्ड टाइम जो होगा कि देन यू कैन वोट कि कौन कौन मिलकर के टीम बनाना चाहता है। तो फिर वो जब होगा तो देन आई विल हैव टू मेक अ डिसीजन कि हाँ ये टीम बन सकती है या नहीं बन सकती है, ठीक है। शैल वी स्टार्ट? आई एम Yes, क्रिएटिंग sir. अ ब्रेक रूम, तो प्लीज ज्वाइन वन ऑफ द रूम। आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आएगा, तो उसको प्लीज पॉपअप कीजिए, पॉपअप को देखिएगा। So I think all of you have been invited to join a room. Kindly join one of those. All of you are requested to join one of the rooms. Hello. Kushi, Kaveri, Ritika, Anya, what are you waiting for? Like, Manjeet, actually, me, Kaveri, Prabha, and Kajal, we are already in one team. okay. Yeah. So I don't But know how we have to go in another room to main screen पे ही है इसलिए. What are these people still doing in the meet room? they're coming back. Actually, when we click the join button, then automatically meeting has left. How did this happen? Maybe you have created some external group. सर टीम 3 की बनेगी या 4 की, क्योंकि मेरे वाले मीटिंग में 4 लोग थे। मेरा हाँ, मीटिंग ही लीव हो गया था ज्वाइन करते के साथ। तो आप लोगों का टीम बना किसी का कुछ? Yes, sir. Yes, sir. सही। Palak, Kaveri and Prabha cannot be in the same team. Sir, why? काजल भी क्योंकि हम लोग सबसे पुराने हैं। Yes. See, तो आप if लोग अलग-अलग टीम को हैंडल कीजिए, बेटर रहेगा।
So why you are separating us? सर अगर हम लोग चारों अलग हो गए फिर काम ही नहीं हो पाएगा। अलग कहाँ हो रहे हो यार, तुम चारों को एक टीम मिल रही है काम करने के लिए, तुम लोग आपस में भी काम करो ना। इतना बढ़िया होगा कि चारों चारों टीम लीडर्स अगर दोस्त होंगे तो चारों टीम का कोलैबोरेशन कितना बढ़िया होगा, नहीं? ठीक है सर। इस पर्सपेक्टिव से भी तो देख के देखो ना। अब 2 टीम लीडर है जिनका बन नहीं रहा है कुछ भी कारण से, तो वो 2 टीम का जो कोलैबोरेशन जो हम लोग बोल रहे हैं कि एक एक सेशन बनाएगा, तो उनका आपस में ही कोलैब बढ़िया से नहीं होगा। तो हम जो करना चाह रहे हैं वो हो पाएगा क्या फिर? नाइस स्ट्रैटेजी। टीम लीडर अगर सब दोस्त है तो सारा टीम दोस्त हो गया फिर। करेक्ट। अगर अभी हमारे मोदी जी जा करके और वहाँ जो भी हमारे पाकिस्तान वाले से जाके बात कर लें और जो तैयारी कर लें, तो हमें फिर बाद में दुख होगा क्या? और सब कुछ बढ़िया चलने लगे तो क्या हम फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद कभी बोलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो चलिए भाई, टीम जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन क्या है और टीम में क्या क्या लिस्ट सर मैं कौन कौन। अकेले थी, मेरे टीम में कोई नहीं था। हाँ सर मैं अकेले थी, तो पलक की टीम में चली जाऊं? हम आ जाते हैं, हम कावेरी। आजो आजो। ठीक, ओके, लेट्स डू इट दिस वे। एक पोल क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू पोल, जिसमें और कौन कौन है पुराना? सर हैंड रेस करवा लें सबसे पुराने वाले के लिए। एक मिनट, अच्छा, एक पलक की टीम हो जाएगी, एक कावेरी की टीम होगी, एक प्रभाव की टीम हो जाएगी, एक काजल की टीम हो जाएगी, और 2 लोग और नाम बताइए पुराने में से। श्वेता, एक श्वेता की टीम हो जाएगी, और ऋतिका। ओके, तो प्लीज vote for your leader. Okay, so yeah, we can write in chat also simply, I think. Avantika, Nancy, Anchal is one team. Okay. No, I think we should wait for the poll. Like if you have internet, then we can wait. You have logged out, logged in from another device. Your polling session is inactive. So that will not be possible now because both of us are logging from the same account. So yeah, Avantika, Nancy, Anchal is one team. Can you write for other team? सर मेरी टीम में आकांक्षा थे, रूपाली एंड सोनी। Please write in the chat.
रितिका एंड जैस्मिन, एक और लो यार कोई। रितिका, अगर कोई आना चाहता है तो दे कैन कम। ठीक है। प्रभा, आकांक्षा, सोनी, रूपाली। They have 4 members. ओके, Like, ठीक है, देखते हैं। Okay. इसको एक्सेल में कॉपी करोगे क्या, या अच्छा ठीक है मैं ही करता हूँ। Also in our team. Sorry, what just mean? Shivani is also our team, means Ritika's team. She is a new intern, right? She is not joined with us. He will join us, but as a new intern. Palak and Sweta, you can't be in a single team, of course, as sir said before. You both have to be in separate team. Are you creating the Excel file, sir, or should I do that? I'm doing it. We have 6 teams now. Let me share my screen. Palak, you haven't said your team members name. Manjeet, I can't see like where it's visible, the voting thing. No, it's not a Voting voting thing. You have to write on the chat that see in the chat everyone is sending their team name. But we already have 18 names. Where is? No, sir, you have repeated 2 names, Shivani and Sweta. Sweta is already a leader, and Shivani is on the Sweta's team. Palak have to decide their team now. So Shivani is already in Shweta's team. And Is that what you? First team is Abantika, Nancy, and Achal. Second team is Ritika and Jasmine. Sir, add And Shivani also Where? in my team. Shivani goes in your team. Control that. Okay. Prabha, Akansha, Soni. Okay. Okay, sir. The one who are not in any team, can you just raise your hands, please? Then we have Khushi, Anya, and Kajal. But again, Shivani's name is repeated. Here. Yeah. Yeah, so Anshika is there, and we also have Anjali. Shall we put them in your team? Palak has sent their names, their team name, like Anya and Khushi. But Anya Khushi is already, Khushi has her own team. Anya, Khushi, and Kajal. Okay, Kajal. Yeah.
Yeah, yeah. Yeah. Sir, सर प्रभा Kaveri में is 4 not है in. तो एक शिफ्ट कर Sir, Kaveri is not in any team, so can I take her? हाँ, यस सर, मैं किसी टीम में नहीं हूँ तो मैं पलक में चली जाती हूँ। you had a Kaveri. Kaveri should be here. Actually, I think there should be 16, right? Let it be 14. Let's start with 14. बहुत ज्यादा Okay. ये क्योंकि पहले 4 सेशन का ही बात करते हैं ना, Okay. है कि नहीं? Yeah. Then Shweta, where you want to go? You want to join Ritika? Fine, sir. And we have Vaishnavi. Vaishnavi, where you can go is where? Either. You have a choice. Wherever you want. Huh? You want to go with Shweta? Yes, sir, wherever you want. Okay. Sir, Now please the add team- Anjali's name in my team. Anjali, Sir, where is Anjali? wait. Huh? Anjali. She's Anjali. nowhere. She's telling to add you there, like right hand. Okay, in Palak's team. Yeah. Who is left? Sir, me. Komal. Sir, Yes, me. sir. Anshika. Rishika, I think you had your team, no? Sir, Anshika. Anshika. Yes, sir. सर मुझे प्रभा वाले टीम में डाल दीजिए। किसे? अंशिका को? यस सर। Okay. And then we have Komal. So Komal, you go here. Yes. Okay? Yes, sir. तो अब टीम तो बन गई, अब ये टीम करेंगी क्या? सर हमारा मेन फोकस फर्स्ट 4 सेशन का है ना? मैं तो बोलता हूँ कि चारों टीम अपने अपने तरीके से, ठीक है, आप लोग सेशन 1 डिजाइन कीजिए। सब लोग सेशन 1 डिजाइन करो। सेशन 1 में क्या है? सेशन 1 में है इंट्रो टू तरुमित्रा। कोई जरूरी नहीं है आपको पूरा सेशन दिखाना है, आप तरुमित्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए कि तरुमित्रा को जान सकें लोग, क्या किया तरुमित्रा ने। और उसके बाद हमारा जो कैंपेन है प्लास्टिक को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा सा, ताकि फर्स्ट डे से ही आप लोगों को प्लास्टिक सेग्रीगेट करने के लिए बोल सकें। हमें क्लियर? यस सर। यस सर। क्या बनाना है? चारों टीम को एक Sorry sir, what? यार चारों टीम को क्या करना है? क्या बताया मैंने अभी? सेशन 1 को पहले डिजाइन करना, लाइक हम लोग उस चीज पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। हम लोग को सेशन 1 में तरुमित्रा का इंट्रोडक्शन देना है और हमें हमारे कैंपेन का इंट्रोडक्शन देना है। Exactly.
तो सेशन 1 कब तक तैयार हो जाएगा? सर संडे तक। Too late. फ्राइडे सॉरी थर्सडे। इसमें कितने लोग हैं भाई एक टीम में? 1 2 3 4 5 5 लोग हैं। 5 लोगों का टीम बनाया है, बताइए। और ये लोग बोल रहे हैं कि हमें संडे तक समय चाहिए। संडे तक, टुडे थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे नाइट सैटरडे नाइट तक हो जाएगा। सैटरडे नाइट हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। Yes, sir. एंड shall we have one meeting tomorrow with the new interns, ताकि उनको भी एक टीम बनाया जा सके, उनके साथ उनको भी इस टीम में डाल लिया जाए। या फिर And one more. हाँ, Yeah, sir. Yeah. Sorry, sir. Yeah, continue. go ahead. Actually, I was telling that I think we should have a person in every team that report us, like what going on, what's the date of the team. I think the group leaders can do this. All of you are clear? जो यहाँ पे टीम या पांचों टीम लड़ने कोलैबोरेट करनी। तो कोई भी दे सकता है सर, जिनको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। हाँ, Yeah, I'm saying that I think we should have one person in every team that is responsible for the reporting. Actually, of course, एक पर्सन तो होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग करें हमें। तो yes. आप बताइए कि पांचों टीम में कौन बता दीजिए। Sorry, sir. What? You are not audible. You correct. We need at least one person from team, क्योंकि हमें करके बता सके कम से कम कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो करें। Yeah. रिपोर्टिंग इन द सेंस वाला नहीं, हमें बताता रहे, हम तक सके। तो ये 5 टीम हमारे, तो 5 4 टीम है, तो चारों टीम Yeah. में से एक लोग का नाम वॉलंटियरली दे सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए भाई। Are you asking from me? I'm asking from these people. बंतिका, Okay. नैंसी, आकर, कावेरी, कोमल, कौन? ओके, इसमें कावेरी, ऋतिका, जैस्मिन, शिवानी, श्वेता, वैष्णवी। हु? Ritika. ऋतिका, So Jasmine. जैस्मिन, ओके। प्रभा, आकांक्षा, सोनी, रूपाली, अनुष्का, अंशिका, सॉरी। सर प्रभा। खुशी, आन्या, काजल, पलक, अंजलि। पलक। सर पलक। ओके। अब अगर मान लीजिए टीम 1 में if Kaveri is not available for XYZ reason, उसके जगह पे who would be the second person who can help, like who would be able to report, who would like to report? कुमारी, अवंतिका, okay. From team 2, रितिका, जैस्मिन तो ऑलरेडी है, तो रितिका, शिवानी, श्वेता, वैष्णवी। So I can. Shweta. Okay, Shweta? Yeah. Yes, sir. She said I can. Shweta. Who can or who can't? Sir, I can.
Okay. And then from Akansha, Soni, Rupali, Anshika. So I can. I का नाम भी होता है. The Sony. And here, Khushi, Anya, Kajal, Anjali. If Palak is not available, who can be the person who could be contacted for any information or anything? Anya, Khushi, Singh, Anya, Kajal. Kajal, Anjali, Sir, कौन? Kajal. अरे, Kajal, sir. Okay. So now I think our team is done. Yes. Yeah. We are ready with the 14. I think there is some mistake in Kaveri spelling because it's not suitable. Like I'm reading it, but it's I was reading like something else. Repair disconnected. Ready to connect. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, is that all for tonight? Shall we call it a night? Yeah, we Yes. should. And tomorrow, let's meet again so we can build a team with the new people. Yes. Sir, what about the letter? Later, yeah, one of the team should take responsibility to write a letter. Who is good at writing? Who has a person who has good in a team who is good at writing things? अब ये सारा काम अपने टीम से करवाइए ना. आपके टीम में इतने लोग हैं, 5 लोग 6 लोग हैं. आप लोग आपस में बात करके बोलिए कि कौन करेगा और मुझे बताइए कि कौन करेगा. आप मुझसे मत पूछिए. लेटर तो आपको सिर्फ अपने हिसाब से रीड्राफ्ट करना है. Ready to connect. Sorry, what? No, all I'm saying is कि लेटर बनाना है तो आप लोग आपस में टीम में बात कीजिए. अपने टीम से बात कीजिए ना. आप लोग 5-5 लोगों का टीम बना है. Yeah, maybe tomorrow it will increase. तो ये आप लोग को आपस में बात करके बताइए लेटर कौन बना रहा है. ठीक है. सारी टीम्स को लेटर बनाना है. अरे नहीं यार, सब लोग अपने अपने टीम से पूछो कि कोई बना सकता है नहीं बना सकता है. वेरी सिंपल. ओके वो लोग टीम में अगर जो लोग बना सकते हैं तो उनमें से सारी टीम में सब लोग को बनाने की कोई जरूरत नहीं. फिर उसके बाद टीम लीडर आप लोग हैं आपस में बात कर लीजिए कि हम लोग बना लेते हैं या फिर तुम बना लो. फिर जो भी बना लो उसके बाद एक फाइनल कॉपी मुझे दिखा दो. यस. Yeah. One more thing, are they going to create a separate group like for the conversation? I'm thinking so. Yeah, you can create your own groups.
और नहीं तो एक वो आजकल चला हुआ है ना, कुछ मिनी ग्रुप्स होते हैं, उसमें कम्युनिटी होता है, दैट या सर, बट दैट विल वर्क। वो पहले अगर हम ही लोग पहले क्रिएट करते तो तब वो थोड़ा सुटेबल होती, बट नाउ इट्स डजंट वर्क एज दे डू, क्योंकि उसमें होते। सॉरी सर। नहीं, you were saying something, no? It doesn't work anymore or what? नो नो, एक्चुअली इट्स वर्क, बट वो अनाउंसमेंट सेक्शन होते हैं, वो सारे ग्रुप को कंबाइन करके वो एक ग्रुप बनाता है। वो ऐसा नहीं होता कि एक ग्रुप को सेपरेट करता है। दे कंबाइन, दे डोंट डिवाइड। हाँ, तो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उनकी एक कम्युनिटी बना देंगे ना फिर। या दैट विल ओके, बट आई थिंक दैट ऑलरेडी वी हैव, लाइक हमारा एक और प्रॉपर ग्रुप है सर, ये है ना, ये HC4CC। हाँ हाँ, तो अगर हम उसे कंबाइन भी करते हैं सारे ग्रुप को, तो वो वैसा ही काम करेगा जो हमारा भी ये नॉर्मल ग्रुप काम कर रहा है। लाइक दैट विल आल्सो डू ओनली वन थिंग, वो सारे लोग को बस एक जगह कंबाइन कर देगा। नहीं तो एक जगह कंबाइन नहीं करना है ना हमें, हमें तो ऑलरेडी सारे लोग एक जगह कंबाइंड ऑलरेडी है। या तो वही मैं बोल रहा था, दैट ये न्यू वो जो कम्युनिटी का जो सेक्शन है वो वही करता है, वो कंबाइन करता है सिर्फ, वो सेपरेट नहीं करता। सो एवरीवन इफ दे वांट टू टॉक सेपरेटली दे नीड टू क्रिएट अ सेपरेट ग्रुप। Yeah. Okay. Let's create a separate group, all of you. Yeah, those who can, anyone from the team, you can create one and add your fellow team members. Yeah. इट वुड बी बेटर अगर टीम लीडर्स ही क्रिएट कर दे। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, बना लीजिए। ठीक है। ओके सर। Now shall we call it a night? Yes, sir. Good night. Good night. Good night, sir. Good night.